So welcome back. This is our today experiment. Uh, Protein sequence domains and motif analysis using protein family database. Okay. So in previous practical, we have discussed about the conserved domain databases at NCBI with CD search and batch CD search. Okay. So similarly, जिस तरह से both databases are similar databases, both belongs to the domain conserved domain databases, but ये कि हम अपने डेटा की reliability के लिए हाँ we can use more than one database. ठीक है. So therefore today we are trying to find the conserved domain in our sequence using Pfam database. Okay. So just copy this from here and right here. You can, here is the link of Pfam database. So before going to the practical session, you should know what is Pfam database. A Pfam database is a large collection of protein families, each represented by multiple sequence alignment and hidden Markov models. क्या है ये प्रोटीन फैमिली है कलेक्शन ऑफ प्रोटीन फैमिलीज कलेक्शन ऑफ प्रोटीन फैमिलीज मीन प्रोटीन फैमिलीज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय द कंजर्व्ड डोमेन. ठीक है, जो भी प्रोटीन फैमिलीज होती हैं वो कंजर्व्ड डोमेन की बेस पर फैमिलीज बनती है. राइट. ओके, लेट मी. सो सिमिलरली अब जो डोमेन है कंजर्व डोमेन है, हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कंजर्व डोमेन. कंजर्व डोमेन एक तरीके की डेटाबेस अवेलेबल है. सो बैकग्राउंड में जो डेटाबेस के जो डेटाबेस है उसके बैकग्राउंड में जो प्रोसेस हो रहा है वो होता है कि हिडन मार्को मॉडल के ज़रिए. हिडन मार्को मॉडल के ज़रिए होता ऐसा है कि जिस तरीके से हमने मल्टीपल सीक्वेंस को अलाइन किया था, मल्टीपल सीक्वेंस को हमने अलाइन किया था, उसके बाद हमने हम उसको साइट्स को जो कंजर्व रीजन्स है उसको हम हाईलाइट कर सकते हैं. ऐसा ही है. और हमने पिछले भी जो प्रैक्टिकल के अंदर भी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट के अंदर भी हमने देखा था कि जो कंजर्व रीजन्स है उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं. दिस इज कंजर्व रीजन. सो बेस्ड ऑन मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट की बेस पर जो एक हिडन मार्को मॉडल है, इस मॉडल के इस ये एक मॉडल है जिसमें हम जिसके ज़रिए हम प्रोफाइलिंग करते हैं या जिसको कहते हैं कि एक एल्गोरिदम है जो आपकी मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट को यूज़ करते हुए बैकग्राउंड में जिस एक्चुअली एक सिग्नेचर डिज़ाइन करता है जिसे हम कहते हैं सिग्नेचर. सिग्नेचर मींस एक कंजर्व्ड रेजिड्यूज की बेस पर एक पैटर्न्स बनाता है. उस पैटर्न्स को हम कहते हैं सिग्नेचर. सो पी फैम के बैकग्राउंड में क्या है, सिग्नेचर्स है, मल्टीपल सिग्नेचर्स है फॉर ईच डोमेन. हर एक डोमेन के लिए एक सिग्नेचर होता है. सिग्नेचर का मतलब ये है कि कुछ एक सीक्वेंस होगा, उसके अंदर स्पेसिफिक होगा कि इस पोजीशन के ऊपर अगर ये अमाइनो एसिड फिक्स हो या इसके साथ ये वाला फिक्स हो तो लाइक अगर मैं यहाँ पे जस्ट टाइप करूँ तो सिग्नेचर का एग्जांपल सपोज करिए LHDXXEP. दिस इज अ सिग्नेचर. ये सिग्नेचर इस तरह से है कि LH. सो दिस इज एन एक्टिव डोमेन साइट्स in a kinase protein के अंदर, and this is involved in binding site, the docking site. Okay, इसको हम docking site भी कहते हैं. So इसके अंदर क्या होना चाहिए, L should be conserved, similarly H should be present, D should be present, but these may be variable.
जो x है ना, दो x हैं, these may be variable. X means any amino acids out of 20. Okay, then E should be conserved, then P should be conserved. So if this signature found in any protein, it means that protein should have the ability to work like kinase domain. ठीक है, काइनेस डोमेन, कंप्लीटली काइनेस डोमेन नहीं, बट शुड बी लाइक एक्टिव साइट ऑफ काइनेस डोमेन. काइनेस डोमेन के अंदर जो एक्टिव साइट्स हैं उसी तरह का फंक्शन होना चाहिए. सो दिस इज अ सिग्नेचर. सो इन पीफेम डेटाबेस, पीफैम डेटाबेसेस में बेस्ड ऑन द मल्टीपल सीक्वेंस, ये हमने कैसे ड्रा किए, मल्टीपल सीक्वेंस की बेस पर. मल्टीपल सीक्वेंस हम अलाइन करते हैं, उसके बाद है कि हम कंसेंसस सीक्वेंस ड्रा करते हैं. सो बेस्ड ऑन दैट कंसेंसस सीक्वेंस we we set signatures for consensus sequence, and then that signature can be used for the identification of conserved domains, right? So then, uh, as proteins are generally composed of one or more functional region, you know what is domain? Domain we have already discussed. Domain is the structural and functional unit of protein. So these are commonly known as domain. Functional regions, कोई एक complete functional region होता है, independently can work. Okay. Different combination of domains give rise to the diverse range of protein found in nature. So possibilities हैं, for example, this is a domain. इसके साथ possibilities है, there may be another domain like HED, like this. This may be another domain. ठीक है, suppose करें, let's suppose this is another domain. So it means if a sequence, कोई एक जीन हो आपके पास, उसके अंदर इस तरह के दो डोमेन्स हो, this is one domain and this is second domain. So what may be the function, okay, the different combination of domains, हमारे पास एक ही जीन के अंदर different combinations हैं, give rise to the diverse range of protein in nature. ओके, सो इसका फंक्शन चेंज हो सकता है. अगर जस्ट हमारे पास एक डोमेन हो, तो possibly the protein may be specifically function, specifically involved in that domain related function. If there are multiple domain in a single protein, then possibly that protein may involve in multiple functions. So the presence of domains indicates the function of that protein, right? Therefore, the identification of domains that occur within the protein can therefore provide insight into their function. हम पिछले प्रैक्टिकल के अंदर भी और उसमें लेक्चर में भी हम देख रहे थे, सीक्वेंस टू फंक्शन के अंदर, सीक्वेंस टू फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं, हम सीक्वेंस को लेते हैं और उसका डोमेन फाइंड करते हैं. सो बेस्ड ऑन कंसर्न डोमेन we can based on conserved domain we can estimate the function of a protein. Okay, then pfam also generate high level of groupings related to entries that are known as clans. clans कहते हैं group of proteins. ठीक है, ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स, जस्ट लाइक आपने फाइलोजेनेटिक ट्री में भी देखा था, जो फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर जो सिमिलर प्रोटीन्स या सिमिलर सीक्वेंस होता है वो एक ब्रांच के ऊपर आता है, जस्ट लाइक दिस. तो लेट्स सपोज दिस बिलोंग टू ए वन ग्रुप और दिस बिलोंग्स टू अनदर ग्रुप. ठीक है, हम फाइलोजेनेटिक ट्री के अंदर हमने देखा था और हमने क्लासिफिकेशन की थी. इफ यू आर लुकिंग हियर, वेयर इज द practical session? Okay, this is practical session. In this practical session, hopefully there will be some example. Okay, just like this. ये देखिए,
This is the practical session of phylogenetic analysis. So in case of phylogenetic analysis, these are called as clade. इनको हम clade कहते थे because these belongs to similar groups. एक group ये यहाँ से लेकर एक group और this may be another group. So similar to phylogenetic analysis, in case of protein, in case of Pfam databases, जो related proteins है that are assigned a group. Okay, similar proteins are near to come near to each other and form a group like structure. So उस group को हम clan कहते हैं, right? So clan is a collection of Pfam entries. What is entries? Entries means, what is entries? Anyone? Although this is discussed in our first practical during the database introduction to database, entries means जो information एंट्री सर वो चीज होती है जो हम सर्च करते हैं। जो सर जो entries डाटा no होता है वो entries means in data or informations या genes जिनको हम कहते हैं gene। कोई भी हम डेटा जो डेटाबेसेस के अंदर हम स्टोर करते हैं उसे हम एंट्रीज कहते हैं। सो कलेक्शन ऑफ पी फैम एंट्रीज मींस पी फैम के अंदर जितना भी डेटा स्टोर हैं उसका उनका एक कलेक्शन होता है जो हमारे सीक्वेंस सिमिलर सीक्वेंस से हमारे सीक्वेंस से रिलेटेड जितने भी सीक्वेंस हैं वो आपस में एक ग्रुप बनाता है और उनको क्लैन कहते हैं हम, ठीक है। बेस्ड ऑन सिमिलरिटी ऑफ सीक्वेंस एंड स्ट्रक्चर और प्रोफाइलिंग हिडन मार्कोव मॉडल, ये तीन चीज़ें हैं। सीक्वेंस की बेस पे हो सकता है, स्ट्रक्चर अगर सिमिलर हो सकता है, या उनकी जो प्रोफाइलिंग है वो सेम हो सकता है। प्रोफाइलिंग के अंदर अगेन प्रोफाइलिंग जो होती है वो सिमिलरिटी और डिससिमिलरिटी की बेस पे होता है, बट जो प्रोफाइलिंग के अंदर मैट्रिक्स के फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जो सिर्फ मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट फाइल को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, फिर उस मैट्रिक्स के ज़रिए हम एक लार्ज डेटाबेस के अंदर हम सर्च कर सकते हैं कि कौन कौन से सीक्वेंस उससे सिमिलर है, राइट। The data presented in each entry is based on the UniProt Reference Proteomes. इसके बैकग्राउंड में जो प्रोटीन है, प्रोटीन सीक्वेंस कहाँ से लेते हैं? यूनिप्रॉट रेफरेंस प्रोटियोम से, ठीक है। But information on individual UniProt K sequence can still be found by entering the protein accessions. Pfam full alignment are available from searching a variety of database, either to provide different accessions, all UniProt and NCBI GI, or different levels of redundancy. So during the PFAM, we can also use the different accessions like UniProt accession or NCBI gene identifiers. Okay, इनको भी हम use कर सकते हैं, but ये उसी केस में होगा जब हमारे पास accession number available हो। Okay, so normally जब हम when we are discussing with or dealing with a new protein sequence, then then the accession of that new protein will not be available in UniProt or NCBI database. Okay, so what is the next option? If we don't have the accession ID of UniProt and NCBI, then there should be another options, means use of sequences. Okay, because the important thing is the sequence. Okay, so now we are moving to the practical session of the PFAM homepage. This is the website xfam.org. Okay, PFAM is located at xfam.org, and this database is again um, organized by Embl EBI. Okay, Embl EBI जो डेटाबेस है उसके अंदर ही ये भी लोकेट होता है, राइट। सो here are different options.
quick link, you can find data in pfam in a various way, बहुत सारी ways हैं, इनमें से हम इंडिविजुअल को देखते हैं। क्विक लिंक के अंदर है इंटर एनी एक्सेशन और आईडीज, जस्ट लाइक पहले हमने डिस्कस किया है। अगर हमारे पास यूनिप्रोट पी फैम आई डी है और इफ़ वी हैव द NCBI gene identifier, then we can just put here the accession ID and can find the domain. But uh, in case if we don't have the UniProt or the NCBI ID, then we should go to the next option. Let's suppose here is so let's suppose this is a sequence, okay, unknown sequence. We are collecting a random sequence copy, and in this case, this is the gene ID or accession, and this is a new ID, and we cannot use or we cannot retrieve the protein based on this ID, okay, because this ID does not belong to the UniProt ID. So the second option we have gene sequence. So we can use the gene sequence, just copy. And the second option is the sequence search. Sequence search, this is important option and should be available. I think this is the uh, very important feature of database. That's कि एक सीक्वेंस की बेस पे डेटा रिट्रीव करना वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज वी नो दैट इफ वी हैव सीक्वेंस एंड न्यू जीन, देन वी विदाउट देयर सीक्वेंस सर्च हम उसकी आईडी की बेस पे हम उसका डोमेन फाइंड नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आईडी दैट्स विल नॉट बी इन यूनिप्रॉड और एनसीबीआई। सो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी शुड सबमिट आवर सीक्वेंस इन एम्बलीबीआई यूनिप्रॉड और एनसीबीआई जैन बैंक या एनसीबीआई प्रोटीन। ओके, सो दैट इज ये एक अनदर सेकंड स्टेप भी हमारे पास आता है कि वो हम सीक्वेंस को उनमें सबमिट करें। बट the easiest way is just to paste here that our sequence. Okay, this is our sequence, and the search value will be e value. Okay, in this search, e value will be the one you can set your own parameters and perform a range of searches. Just click here, we will check the, okay, again look at this. This is the e value. What is the e value and what will be the effect of e value on our results? You know, we already discussed during our previous lectures and practical session, like about e value we have discussed during the similarity analysis, and we have already discussed in, this value in conserved domain database of NCBI. Okay, so we this is the sequencer we are just pasting here and just submitting. The background parameter should be by default. Okay, so now you can check here. This is the domain that's present, that is present in our query sequence. Okay, again all types of information are available here. This is the family belongs to the kinase family, and this is the description protein kinase domain. So हमारे पास एक अननोन सीक्वेंस था और हमने क्या किया, उसका उसके अंदर कंजर्व डोमेन फाइंड किया, राइट? Now we know the function of our gene. How? We can just copy this and Google this. What is the function of this domain? Okay, so you can read about the protein kinase domains and function from here. यहाँ से आप easily पढ़ सकते हैं, and then you can say yes, this is the function of our protein sequence, right?
In this case, you know, protein kinase. Kinase is a protein that are involved in phosphorylation and dephosphorylation. Okay, so we are not going in detail of protein kinase because this is not our target. This may be vary from protein to protein. For example, I have used the sequence. Okay, so like this. So now we know this sequence belong to the kinase family, right? Okay, so we will take another sequence. Let me search if there is any other sequence for. Okay, no, okay, this is not belong to. Okay, so suppose this is we have another sequence and uh, we are finding the domains of this gene. Okay, so again we will paste here and then use the submit option. Now you can differentiate the two sequence. Okay, the our previous sequence was belong to the protein kinase domain, and uh, this domain, this query belongs to the MIP. Okay, so now again you can find the function of this. Just copy and paste here and just enter. So now you can read about the MIP major intrinsic protein comprises a large superfamily of transmembrane domain channels that are grouped together on the basis of homology. The MIP superfamily includes three subfamilies: aquaporins, aquagly, glyca, glyceroproteins, and etc. Okay, so so this was the result of our query sequence. Okay, then these are the parameters that's used are our result. You if you click here show, this will give the sequence and the signatures of MIP domain, right? So okay, now you can check out. This is the sequence. Hash sec means sequence that we have inserted, right? We have used. This is the sequence. So this is our sequence, the last sequence, and this is the background to information saying these may be values for the quality or similarity of sequence to the hidden Markov model. Okay, this is the HMM means the signature. Yes, वो सिग्नेचर है जिसका मैंने पहले आपको बताया था कि ये इसकी बेस पे बैकग्राउंड में जो सिमिलर सिग्नेचर है ना वो ये है। आप देख सकते हैं सम साइट्स के ऊपर ये यहाँ पे कुछ डॉट्स भी हैं मींस गैप्स हैं। गैप्स का मतलब है कि हमारे सीक्वेंस की वजह से गैप्स हैं। सो दिस इज द कायनात अहमद ओके नो this is the match result. Match result means who is talking? Is there any query? Please let me know. Yes, please. Again. Is there any query? सर एक दफा ई वैल्यू का बता दे दोबारा। ई वैल्यू का ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं इस प्रैक्टिकल के अंदर। वेयर इज द प्रैक्टिकल?
इस फाइंड के ऊपर आई थिंक आप इसमें दोबारा से गो थ्रू कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स ओके, आप वहां से भी देख सकते हैं, बट e value is the expected value means this is based on the size of database, okay। uh, database के अंदर how many sequences are there total, then out of them how many similar sequences are there, then of those similar sequence हमारे sequence के साथ इसकी identity कितनी है, ये चीज ये बताती है कि e value, ठीक है। सो e value दिस इज इन लॉगरिथमिक वैल्यू में होता है हमेशा, ये 10 के पावर माइनस में होता है। जितना ये माइनस में वैल्यू ज्यादा होगी, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये 18 है, सो अगर ये 20 हो जाए, इट्स मींस इट विल बी मोर स्पेसिफिक, and the acceptable value is e value और 1, e value 1 भी acceptable है। और अगर हम आप इसको मोर स्पेसिफाई करना चाहते हैं तो हम e की वैल्यू -5 रखते हैं। -5 से अब बिलो जो वैल्यूज है, मीन -6, -7, -8 जितने भी है, इट्स मीन्स दोस प्रोटीन्स हैव सिमिलर फीचर्स, और हम ये कह सकते हैं कि होमोलोगस प्रोटीन्स आर देयर, ठीक है। ये प्रोटीन्स क्या है, एक दूसरे की होमोलोगस है, सिमिलरिटी की बेस पे होता है, ठीक है। सो अगर हम ई वैल्यू कम करते हैं, कम मीन्स वी आर मोर स्पेसिफाइंग अवर रिजल्ट्स। हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम क्या, जिस तरीके से अगर हम फॉर एग्जांपल हम फिल्टर कर सकते हैं कि आपके पास आपके देखिए जिनका 99% सिमिलरिटीज है वो सिर्फ हमारे पास रिजल्ट आ जाए, 99 या 99 से अबव हो सिमिलरिटीज, ठीक है। सो इस कंडीशन में आपके पास पॉसिबल है कि सपोज करिए अगर को मिलियंस में भी सीक्वेंस हो, आपके पास 5 to 10 सीक्वेंसेस ही आ जाए, जिसमें हम ये सेट करें, फिल्टर करें कि सिर्फ वो सीक्वेंस दे दे जो हमारे सीक्वेंस से 99.9% सिमिलर हो, ठीक है। अगर आप इस रेंज को कम करते हैं, फॉर एग्जांपल आप इसको सेट करें कि 85 के ऊपर, हम ये कहते हैं कि जिन जो जो सीक्वेंसेस हैं डेटाबेसेस में, अगर हमारे सीक्वेंस से सिमिलरिटी 85% हो, देन शुड रिट्रीव इस रिजल्ट के तौर पे आपके पास कितना आएगा, यू विल गेट मल्टीपल सीक्वेंस, ठीक है। मल्टीपल सीक्वेंस मोर देन 10, पॉसिबल है मोर देन 100 सीक्वेंसेस आपके पास आ जाए। इस मीन्स वी आर इंक्रीजिंग द रेंज ऑफ रिजल्ट, सर्च रिजल्ट। सो अगर हम if we are decreasing the e value, it means we are limiting our search result, कि we are trying more specific results, more similar sequence, ठीक है। ये इसको हम ये expected value कहते हैं। Again this is the bit score। बिट स्कोर का मतलब ये है कि दिस इज द बेस्ड ऑन, ये स्कोरिंग होती है बैकग्राउंड में, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्कोरिंग मैट्रिक्स के जरिए, पेयर वाइज अलाइनमेंट के जरिए आपस में इनका इनका स्कोरिंग होता है। सो दिस वैल्यू जितनी ज्यादा वैल्यू होगी, इसका मतलब है ज्यादा से ज्यादा हमारा जो रिजल्ट है वो अथेंटिक एंड रिलायबल है। दिस वैल्यू जितनी कम होगी, दिस वैल्यू कम का मतलब है कि -18 से -20, -30, -15, -70, 170, दिस लाइक। सो जितनी वैल्यू कम होगी, इसका मतलब है our result is reliable and authentic, right? So this is the description of domain. This is the types, entry type domain here. This may be motifs and any other clan. There is no any clan and a envelope. Sorry. So envelope start, envelope and envelope means जो कुछ भी हमारे पास ये क्या कहते हैं, जिसे हम बैकग्राउंड में जो सिग्नेचर हैं
उस हिसाब से, ठीक है, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट हो रहा है और N26 के ऊपर स्टार्ट होता है। अलाइनमेंट, अलाइनमेंट इज मीन्स आवर सीक्वेंस, हमारे सीक्वेंस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे एंड हो रहा है, राइट। देन हिडन मार्को मॉडल, हिडन मार्को मॉडल, यहाँ पे जो चीजें मेंशन किया हुआ है ना, ये 3 चीजें हैं। सो हिडन मार्को मॉडल एक सिग्नेचर है, सिग्नेचर के कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ से एंड हो रहा है। टोटल हिडन मार्को मॉडल की लेंथ क्या है, 227 है। And bit score we have discussed. This is the e-value and predicted active site. Is there any active site? So इसके अंदर हमें कोई active site show नहीं हुआ है, right? You can also hide this. Okay, so okay, we will check the detail of MIP. So for this, you can click here MIP के ऊपर आप click करें, so you will get complete information about MIP domain. Okay, so this is a summary of MIP domain. So you can read from here. So what is the function of this? This is a function, okay, this is a transmembrane domain again, and there are different groups. These are different groups, and these are about this family. ठीक है, so these are the references. Means अगर हम बैक जाते हैं, हम इसको गूगल नहीं करते हैं, या आप डायरेक्ट ही इस फैमिली, जो फैमिली है या डोमेन है, उसी का फंक्शन आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो यू हैव टू use this option. Just click and on MIP, then you will get the detailed information. Okay, so this was our today practical tutorial. If there is any query, please let me know from this whole practical session. Okay, so now we are closing this this part, and please rejoin the meeting for the discussion part. Okay, so now we are closing this meeting. Thank you so much.